Hello student, good morning. Jason. In previous lecture we studied about Henry's law and its application. In today's lecture we will solve some of the intakes and examples based on Henry's law. So we will take numericals on Henry's law. Numericals on Henry's law. First example I am taking of your textbook, that is example 2.4. Example 2.4. What this question says, if N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin temperature, how many millimoles of nitrogen gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that nitrogen exerts a partial pressure of 0.987 bar. Henry's constant for nitrogen gas is 76.48 kilobar. Question you can read, even you can read from your textbook. Now I am going to what is given in the question and what we have to find out. Solution, what is given in the question, that is partial pressure of nitrogen is given. What is the partial pressure? 0.987 bar. Partial pressure is given 0.987 bar. Henry's constant is given, that is 76.48 kilobar. See, unit should be same while you are solving. So we have to convert into bar only. 76.48 multiplied by 1000 gets converted into bar. Now according to Henry's constant, what we have to find out? Millimoles of nitrogen gas dissolved. उनको ढूंढना क्या है? नाइट्रोजन गैस के कितने मिलीमोल्स डिजोल्व हैं. तो पहले हम इसके मोल फ्रैक्शन निकालेंगे हेनरीज लॉ से. सो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग व्हाट इज द फॉर्मूला? पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस. पार्शियल प्रेशर इज गिवन, हेनरीज कांस्टेंट इज गिवन. वी कैन फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन से मोल्स निकालेंगे और मोल से मिलीमोल्स निकालेंगे. लेट अस सी हाउ वी विल फाइंड आउट. सो योर मोल फ्रैक्शन विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस, partial pressure of nitrogen upon Henry's constant. So your partial pressure is 0.987 upon Henry's constant 76.48 into 10 raised to the power 3. By solving this with the help of calci, you will get the answer 0.01290, or we can write down 1.29 into 10 raised to the power minus 5. So this is your mole fraction of nitrogen gas. We have got mole fraction. Now with the help of mole fraction we will find out moles and then convert into millimoles. We are knowing density of water. Density of water. What is density of water? 1 gram per ml. 1 gram is equal to how many ml? 1 ml. So here nitrogen is dissolved in how much? Nitrogen dissolved in 1000 ml or 1 liter. So mass of density के ऊपर से mass of water solvent ले लिया. Mass of 1000 ml water will be equal to 1000 grams. So moles of water will be, water के कितने मोल्स हो जाएंगे? Moles of water is equal to 1000 upon 18, that is 55.55 moles. 55.55 moles. Now suppose there are n moles of, nitrogen are there. N moles of nitrogen are dissolved. Then total moles क्या हो जाएंगे? Total moles will be n plus 55.55, or which is congruent to 55.55 moles. नाइट्रोजन के n moles dissolved है और वाटर के 55.5. Water is more in amount. We will neglect the moles of nitrogen gas because gas dissolved very less in it. तो टोटल मोल्स कितना हो गया? 55.55 moles. From that we can find out, because we know
N is very much greater than 55.55 moles. Now we'll find out, that is mole fraction we are knowing. So mole fraction of N2 gas is equal to moles of N2 upon total moles. Mole fraction formula लगा देंगे, total moles. So what is the mole fraction? 1.29 into 10 raised to the power minus 5 moles of N2. Moles of N2 upon total moles 55.55. Cross multiply करेंगे, we'll get moles of N2. By multiplying this, we'll get 1.29 into this. So by multiplying this, we'll get 71.65 into 10 raised to the power minus 5. For these are moles. मिलीमोल्स में करने के लिए millimoles of N2 gas will be 0.716. These are millimoles. Millimoles के लिए multiply by 1000 we will do. So this is the solution of your example. Now we are coming another Henry's law based numerical, that is in-text question. In-text देख लीजिए. In-text question, that is 2.6. In-text question 2.6. What this question says, I am reading from here. H2S, a toxic gas with rotten egg-like smell, is used for qualitative analysis. If the solubility of H2S gas in water at STP is 0.195 molality, calculate Henry's constant. What is given? Solution. What is given in the in-text question 2.6? Solubility of H2S gas. इसमें H2S gas having very bad odor. इसका rotten fish-like or egg-like smell is there. So solubility of H2S gas is given in water, that is 0.195 molality is given. How many? What is the molality of dissolved H2S in water? Water में वो इतनी molality dissolved है. So this molality means 0.95 molality means 0.195 moles of H2S gas 1 kg water or 1000 gram water. So according to Henry's law, partial pressure, we have to find out what is Henry's constant. What we have to find out here? KH, Henry's constant. So according to Henry's law, what is the formula? Partial pressure of H2S is equal to Henry's constant into mole fraction of H2S. We have more Henry's constant we are not having, but partial pressure, what is the partial pressure? Pressure at STP will be equal to 0.987. standard है ये 0.987 bar. So we'll find out mole fraction. We have to find out KH. For this KH we require KH is equal to partial pressure of H2S upon mole fraction, but we don't have mole fraction, so we'll find out mole fraction of H2S. How we can find out moles of H2S gas upon total moles? So moles of H2S 0. Moles of H2S 0.195. moles of water 1 liter में 55.5. So moles of H2S will be 0.195 upon 0.195 plus 55.55. And from this we get mole fraction, that is 0.195. Addition of this will give 55.745. Now from this we are getting mole fraction of H2S, that is 0.0035. Putting this value here, what we get? Henry's constant. What is the partial pressure? 0.987 standard pressure upon 0.0035.
which gives when you will calculate, it will going to give 282 bar pressure, Henry's constant. So this is your second in-text unsolved question. Now we are coming to the next in-text question, that is 2.7. I think so it is clear to everybody. Now we are coming to next in-text question of your text. Next in-text question. Next in-text question 2.7. The question says, I am reading the question, Henry's law constant for CO2 in water is 1.67 into 10 to the power 8 Pascal. What is given? Henry's constant is given. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water. 500 ml of soda water में how much CO2 is dissolved? CO2 कितना dissolved है? Henry's constant given है. Now we are moving towards solution. That is what is given in the question, Henry's constant, KH. What is Henry's constant? 1.67 into 10 raised to the power 8 Pascal. What is the partial pressure of CO2? CO2 का pressure is given, that is 298 पे 2.5 atmosphere pressure. But Pascal, we have to convert, both the values should be in the same. So what we will do? एटमॉस्फेयर को पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 101325, दैट इज विद दिस वैल्यू, एंड वी कन्वर्ट प्रेशर ऑफ CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एटमॉस्फेयर में गिवन है, उसको हमको पास्कल में कन्वर्ट करना है. नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस वी विल फाइंड आउट, दैट इज हेनरीज लॉ. अप्लाइंग हेनरीज लॉ वी विल गेट मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन, नाउ मोल फ्रैक्शन विल बी, mole fraction निकालना. So what will be the mole fraction? Partial pressure of CO2 upon Henry's constant. So what is partial pressure of CO2? 2.5 into 101325 upon what is your Henry's constant into 10 raised to the power 8. We will get the answer when you will solve 151684.132 into 10 raised to the power minus 8 or 1.517 into 10 raised to the power minus. We have got this mole fraction we have calculated. Now from this हमने mole fraction निकाल ली है. Mole fraction निकाल लिया. With this mole fraction निकाल के what we will find out? We will find out moles. और moles के लिए mass of soda water, मास ऑफ कितने मास में डिजॉल्व है CO2? मास ऑफ 500 ml सोडा वाटर, 500 ग्राम्स अकॉर्डिंग टू डेंसिटी. डेंसिटी क्या है वाटर की? डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml. 1 ग्राम के इक्वल टू, तो 500 ml 500 ग्राम के इक्वल टू. तो मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 500 अपॉन 18, it will give 27.77. So round figure में 70. Now moles of CO2 dissolved, we will neglect that. That is the total moles. Total moles will be n plus 27.78. That is congruent to 27.78 because n is very very less than 27.78. Is it clear? Now we will find out moles with the help of mole fraction. What is the mole fraction of CO2? Moles of CO2 upon total moles. So mole fraction we have already calculated, 1.517 into 10 raised to the power minus 3 moles of CO2 upon total moles, 27.78. Cross multiply, we will get the moles of CO2. How many moles? By multiplying this, we will get the value. We will get the value 42.14 into 10 raised to the power minus 3 moles. Now we have to find out these many moles, और millimoles करना हो तो 42.14 millimoles में यूज है. Now quantity we have to find out grams में.
quantity grams of CO2 dissolved. Grams of CO2 we have to find out. So 42.14 moles dissolved multiply by its mass. CO2 का molar mass 44. So answer comes to be 1.854 gram. This is the answer. I think so it is clear to everybody. Now we are coming to today's topic. One topic I will take, that is, so students, it is clear. With the help of the density, we'll find out the moles of solvent or water in this question and how the Henry's law is applied in the numericals. Now we are going to the next topic, vapor pressure of liquid solution. Next topic, vapor pressure of liquid solutions. So what is vapor pressure? First we have to understand what is vapor pressure. So what is vapor pressure? Before writing the definition, I will tell what is vapor pressure. Suppose I have taken a closed jar. In this I have taken a beaker, and in this water is filled, and temperature I have kept constant. T is constant, and particles from the liquid moves, or liquid gets converted into the gaseous vapors. Gaseous form it is converting, and 1 molecule, 2 molecule, 3 molecule, 4 molecule, and then so many molecules, the liquid gets converted into molecules, and they are not able to hold each other. Then they will start, when they are not able to hold themselves, then they come closer and they will strike with the surface of the liquid, and they will come closer and they will convert into the liquid. So when the evaporation rate and condensation rate becomes same, and the pressure becomes, the vapor pressure, the pressure becomes constant. That constant pressure, the number of molecules leaving the liquid and number of gaseous molecule converting in the liquid becomes same. This becomes equal or same. Condensation and evaporation rate becomes same. दोनों रेट सेम हो गए, उस टाइम पे जो प्रेशर यहाँ पे कैलकुलेट होगा और मेजर होगा, दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड. जब लिक्विड से गैसियस फेज में और गैस फेज से लिक्विड में कन्वर्ट होने वाले मॉलिक्यूल्स की रेट सेम हो जाएगी, उस टाइम पे जो वेपर प्रेशर मेजर होगा, दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड्स. तो डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन? एट certain temperature, the rate for the process of liquid vapor to liquid phase. कौन सा रेट? वेपर टू लिक्विड फेज एंड liquid to vapor phase. Vapor phase becomes equal and equilibrium is established in system. Due to equilibrium, the pressure of vapors on the surface of solution becomes constant, which is called vapor pressure of solution. Is it clear? वेपर से लिक्विड फेज का रेट, लिक्विड, दिस इज लिक्विड एंड दिस इज वेपर फेज. लिक्विड वेपर फेज से लिक्विड एंड लिक्विड से वेपर फेज में जो कन्वर्जन है, दैट रेट बिकम्स कांस्टेंट, एंड एट दैट टाइम व्हाटएवर प्रेशर is become,
that pressure which is measured becomes constant. That pressure is called, above the solution, is called vapor pressure of the liquid. Is it clear? What is vapor pressure of the liquid? When the rate of vapor to liquid phase and liquid to vapor phase becomes equal, and at that time, due to the equilibrium, the pressure of the vapors on the surface becomes constant. तब प्रेशर क्या हो जाएगा? दोनों रेट लिक्विड टू वेपर, वेपर टू लिक्विड इक्वल हो जाएंगे. उस टाइम में जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट. दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. नाउ वी आर टेकिंग वन डेरिवेशन. राउल साइंटिस्ट, राउल्स लॉ वी स्टडी फॉर लिक्विड सॉल्यूशंस. नाउ वी विल टेक बाइनरी सॉल्यूशंस. वेपर प्रेशर फॉर vapor pressure of liquid solution. Liquid solution. We are studying for, we have taken one solution in which solute and solvent both are liquid. So let us take the binary solution. Suppose we consider a binary solution. What is binary solution? जिसमें एक solute और एक solvent हो. Suppose we consider a binary solution consisting of components, consisting of two liquid components, both are liquid. Two liquid components, that is component 1 and here component 2. Two components are there. Solute और solvent दोनों liquid phase में. Two components से हमने solution लिया. Both are in liquid. So what will be the mole fraction of, mole fraction किससे represent होगा? So mole fraction of such first component will be represented by x1. Partial pressure, इस component की वजह से जो pressure होगा that will be partial pressure. तो partial pressure किससे represent होगा? Partial pressure will be represented by T1. For component 2, mole fraction will be represented by, that is x2. And partial pressure of this component, partial pressure किससे represent होगा? P2. Okay. Now according to Mole's law, this partial pressure will be depending upon कितना partial pressure बनेगा इस liquid की वजह से, that will be depending upon its mole fraction. Raoult was the first scientist who gave the relation between this, that is the Raoult's law for volatile liquids. Volatile liquid. What is that law states? Law states that partial vapor pressure of each component of solution is directly proportional to its mole fraction in solution. He gave the relation between the mole fraction and the partial pressure of that component in the solution. राउल्स लॉ ने दो लिक्विड्स के बीच में क्या रिलेशन है, उसके मोल फ्रैक्शन और उसके पार्शियल प्रेशर में, उसके लिए लॉ दिया. तो अगर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन x1 है, उसका पार्शियल प्रेशर P1 है, तो पार्शियल प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा? पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली डिपेंडिंग अपॉन इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन. जितना मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उतना पार्शियल प्रेशर भी उसका ज्यादा होगा, जितना मोल फ्रैक्शन कम होगा उतना उसका पार्शियल प्रेशर भी कम होगा.
So indirectly we can say that for first component, partial pressure of the first component will be directly proportional to x1, and for the second it will be partial pressure will be directly proportional to the mole fraction of the second component. Removing this sign, what we get? P1 is equal to P1 is equal to P1 naught into x1 For this, P2 is directly proportional to, that is its mole fraction. Now P2, removing this proportionality sign, what we'll get? P2 naught into x2. What is here P1 and P1 naught? P1 naught क्या है? Partial pressure in its pure state. प्योर स्टेट में उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर. P2 नॉट क्या है? व्हाट इज P2 नॉट? प्योर स्टेट प्रेशर. जब वो लिक्विड सॉल्यूशन में नहीं होगी, सेपरेट होगी, तब उसका जो प्रेशर होगा. वाटर का ओरिजिनल प्रेशर क्या है? वाटर बॉइल्स एट 373 डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस, 373 केल्विन. तब उसका प्रेशर 1 बार है. शुगर डाल दोगे तब उसका 1 बार नहीं रहेगा, इट विल डिक्रीज. सो प्योर स्टेट का प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाय P1 नॉट. मोल फ्रैक्शन फर्स्ट कंपोनेंट का जो प्रेशर है प्योर स्टेट में P1 नॉट. सेकेंड वाले कंपोनेंट का उसके प्योर स्टेट में प्रेशर इज P2 नॉट. इट इज योर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. Is it clear? Now we'll find out. So what is Rahul's law? Partial pressure of each component of solution. इस पे डिपेंड करेगा. अगर मैंने एक सॉल्यूशन लिया है उसमें 2 लिक्विड है, 2 लिक्विड्स आर देयर, तो इसका प्रेशर P1 और इसका प्रेशर P2. तो किस पे डिपेंड करेंगे? P1 उसके मोल फ्रैक्शन पे और P2 उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा. सो दिस रिलेशन वाज गिवन बाय राउल्स लॉ. नाउ टोटल प्रेशर will take. Now total pressure according to Dalton's law के according to total pressure, P total will be, what will be P total? P total will be P1 plus P2. We are knowing what is P1. We will put the values. P1 naught into x1 plus what is the value of P2? P2 naught into x2. Now what can be the mole fraction 1? Mole fraction 1 क्या होगा? एक सॉल्यूशन के अंदर x1 की वैल्यू क्या होगी? टोटल सॉल्यूशन इज 1 में से अगर आप x2 माइनस कर दोगे, दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज x1. तो x1 को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. P1 naught 1 minus x2 plus P2 naught x2. Now we will multiply this. We will get P1 naught minus P1 naught x2 plus P2 naught into x2. कॉमन ले लेंगे, so it will be P1 naught plus, इन दोनों में P1 naught, here P2 naught minus P1 naught into x2. So this is the formula to find out the total vapor pressure of the solution. From here P total can be calculated. P total. From these 3 conclusions we can make. Conclusions. Before going for the conclusion, I'll draw that. We'll plot the diagram. Plotting the diagram, you will come to know more easily. Have a look on this. Mole fraction में we'll plot it. If we plot a graph between P1 or P2 versus x1 and x2, what we get? Have a look. Here we are taking, it's not so perfect. Here we are taking mole fraction. ये मोल फ्रैक्शन ले लिया हमने. यहाँ पे x2 कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन x2 0 है. ये 0 मोल फ्रैक्शन. यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है, यहाँ पे वेपर प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर वेपर प्रेशर. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ x2 0 है. यहाँ पे 0.2, 0.4, 0.6, 0.8. हियर इट हैज बिकम 1. x2 की वैल्यू हियर इट हैज बिकम 1. अगर इसका मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा
तो व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर? जब x2 की वैल्यू 0 थी, उसका कुछ नहीं था, तब उसका प्रेशर भी 0 था। x2 का मोल फ्रैक्शन बढ़ गया 0.2, तो उसका प्रेशर भी इंक्रीज हो गया। उसका मोल फ्रैक्शन और इंक्रीज हुआ, तो उसका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता गया। एंड हियर इट इज इन इट्स प्योरेस्ट स्टेट, सो इट इज P2 naught. It is P2 naught. So this is your partial pressure second. Now if I'll take x2 here, it has become 1. Now if I'll take x1 here 0, x1 0 है और x यहाँ पे 0.2, so here mole fraction will increase and x here x1 will be 1, means here it is 0, and if we will increase in this way, if mole fraction of first component increases, then the partial pressure also increases, and we get this graph in this way. So this is your P1 naught. जैसे जैसे सेकेंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमने बढ़ाया, उसका प्रेशर भी बढ़ गया, पार्शियल प्रेशर, और यहाँ पे वो कंप्लीट 2 हो गया। कंपोनेंट 2 हैज बिकम 1. मोल फ्रैक्शन ऑफ x2 इट इज इन द प्योरेस्ट स्टेट, तब उसका हाईएस्ट प्रेशर होगा। जब हमने x1 का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करना शुरू किया, तो उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो गया, पार्शियल प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो गया। Is it clear? So this is partial pressure 1 and this is partial pressure of the first component and this is second component. First one and this is second one. So total pressure क्या होगा of the solution? Total pressure of the solution will be this one. This is the total pressure of the solution. P total. That is what this is. P total. So P1 will represent P1 naught. P1 naught solution का minimum pressure. P2 naught is greater than P1 naught. So this will represent minimum total vapor pressure of solution. और ये क्या represent करेगा? Maximum total vapor pressure of solution. P1 naught minimum total pressure of solution, total vapor pressure of solution बताता है, और P2 क्या बताएगा? Because P2 is more volatile, P2 जल्दी उड़ सकता है, तो P2 का प्रेशर ज्यादा बनेगा, जल्दी बनेगा, तो टोटल वेपर प्रेशर जो होगा सॉल्यूशन का वो P2 नॉट से रिप्रेजेंट होगा, और मिनिमम टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का P1 नॉट से रिप्रेजेंट होगा. This will represent P1 naught will represent minimum total pressure of solution and P2 naught will represent maximum total vapor pressure of the solution. So conclusion क्या draw हुई? What is the conclusion drawn here? That the total vapor pressure of solution can be related to the mole fraction of any one component of the solution. सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर किससे पता चलेगा? दोनों कंपोनेंट्स में से जिसका ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा वो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर बनेगा, यानी किसी भी वन कंपोनेंट के प्रेशर पर डिपेंड करेगा टोटल प्रेशर. सेकेंड, the total vapor pressure of the solution varies linearly. जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है उसका प्रेशर भी बढ़ रहा है. मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, लीनियरली प्लॉट भी वेपर प्रेशर का ग्राफ भी लीनियरली इंक्रीज हो रहा है. द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली with mole fraction of any one component. Why I am writing any one component? क्योंकि कोई भी वॉलेटाइल हो सकता है 2 मोर वॉलेटाइल हो तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का 2 से देंगे. अगर फर्स्ट कंपोनेंट मोर वॉलेटाइल होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो टोटल वेपर प्रेशर फर्स्ट वाले कंपोनेंट से देंगे. So this is about conclusion, and now we are coming to the third conclusion, that is first one, total vapor pressure of solution can be related with the mole fraction. टोटल जो है वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का
वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? मोल फ्रैक्शन। जिसका ज्यादा मोल फ्रैक्शन उतना ज्यादा टोटल वेपर प्रेशर। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके साथ इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है? विद द मोल फ्रैक्शन। तो थर्ड इज ऑल्सो सिमिलर, ओनली द डिक्रीज or increase in total vapor pressure of solution. Total depends on decrease or increase of the mole fraction of any one component. So these are the three conclusions from this chart. So total vapor pressure इसका ये होगा, maximum total vapor pressure of solution, minimum, and by plotting the graph between mole fraction और vapor pressure. Mole fraction x1 x2 का, x1 का उसका vapor pressure, x2 का उसके vapor pressure के साथ plot किया तो which type of graph? Straight line, linear graph we got it. और उससे हमको पता चला solution का minimum vapor pressure क्या होगा और solution का maximum pressure vapor pressure क्या होगा. Now we are coming to if at all solution is in equilibrium. At equilibrium state, अगर solution liquid और vapor के बीच में equilibrium है, solution और vapor के बीच में equilibrium है, suppose solid solution and vapor pressure के बीच में equilibrium आ गया, then the mole fraction किससे रिप्रेजेंट करेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 will be y1 and mole fraction of component सेकेंड फ्रैक्शन का मोल फ्रैक्शन किससे देंगे? y2 से. अगर सिस्टम वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम है तो मोल फ्रैक्शन को y1 y2 से रिप्रेजेंट करेंगे. y1 फर्स्ट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है, y2 सेकेंड मोल फ्रैक्शन का. तो पार्शियल प्रेशर किसे देंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ P1 विल बी गिवन बाय y1 इंटू P टोटल और सेकेंड वाले का देंगे विद सेकेंड का पार्शियल प्रेशर विल बी y2 इंटू P टोटल. मोल फ्रैक्शन उसका, और ये y represents the mole fraction in the equilibrium state. So next time we'll solve the numericals on Raoult's law for liquid solutions.